Projected. Pendant. सात सात आठ बीस Good morning, everyone. Thank you for joining in. Uh, uh, so we have prepared a short PPT, right? And we'll quickly discuss the options that are generally available. Or उसके बाद में we can have a Q&A session and we can discuss one-on-one on as to what are the options that you are getting, right? कुछ एक points जो मैं starting में बोलना चाहूँगा. पहला चीज for those who have gotten a rank in JEE Advanced, I would suggest कि go into KGP because although KGP has stopped this department change option, जो last year तक था based on the GPA, this option was there with the students. I think he might be. Let's go. Yeah. So those who have gotten a rank in JEE Advanced, although KGP has stopped this department change thing, right? Because that was only allowed for the top 10% students. They have started with this double major policies, right? So although the circular that they have given is not 100% clear, but what I understand that you will have an option at the end of first year to select another course of your choice, and you will become a 5 year tenure mostly because bids may it is already there. It's a 5 year tenure, and you will get 2 degrees. Major in one and minor in one तो offer होता था पहले भी, right? कि अगर आप 6 courses ले लो उस particular stream के, so you get minor in whichever stream that you want. So now this will be double majors.
Double majors would mean you will have 2 degrees at the end of 5 years, and one of them would be in the stream that you go with, and the other will be in the stream that you opt for at the end of first year. So end of first year में अब ये clarity नहीं है कि ये clarity नहीं है कि will you get any stream that you want, or that would be on a GPA basis. But still, if it is on a GPA basis also, and if you end up with any of the circuital stream, तो चलेगा. By circuital stream means CS, MN, electronics, electrical, instrumentation and industrial. तो इसमें से कोई भी एक stream अगर मिल जाए तो 2 डिग्री मेरे पास होगी at the end of 5 years. So and that is what is the idea of double majors, right? Bits में है double majors का thing, but it is only for BSc students, right? कि BS in Maths plus MTech in some other stream. तो यहाँ पर डबल बीटेक अलाउड है या नहीं, बीएस प्लस एमटेक है, ये सब चीजें के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी कम है. मेल्ड वन ऑफ आवर प्रोफ्स in the physics department. Let's see what he replies back. तो अगर उनका reply जैसे ही आता है तो I'll update on the group. But I've also mailed the director there. So let's see what they have to say on this. But it is implemented this year. So many students used to go to Kharagpur क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन रहता था, और सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन खड़गपुर में रहता था. 10% ऑफ द इनटेक, राइट. तो 1700-1800 बच्चे जो जाते थे, तो 170-180 बच्चों का डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन रहता था. तो वो ऑप्शन अब हट गया, तो खड़गपुर विल नॉट बी द फर्स्ट चॉइस फॉर मेनी स्टूडेंट्स. एंड सो डबल मेजर के बारे में नॉट एवरीवन वुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट. But again, I would suggest that if you go for it, you will have a good chance of getting into a stream of your choice at the end of first year, right? So go for a lower stream, whatever stream that you are getting. If you have a lower rank in JEE Advanced, go to Kharagpur instead of going into a newer IIT. If you are getting a chance in Kharagpur में जाओ, और फिर based on the first year marks, you can get a stream of your choice. थोड़ा प्रेशर ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि मेरे को 2 स्ट्रीम्स की पढ़ाई साथ में करनी होगी, but it is fine, the pressure is not that much. मतलब यहाँ पर एक साल रिपीट करके और फिर जो जाने का सोच रहे हैं कई लोग, वो नहीं करना. उससे तो फार इजियर रहेगा टू गो इनटू अ कॉलेज एंड वर्क. ठीक है, 2 डिग्री का भी मेहनत वुड बी लेस देन यहाँ पर वापस से एक साल जेईई का प्रिपेयर करने का और रिपीट करने का जो पेन है, उससे it will be easier. So that is one point which I wanted to put across right away. And also the tag that we have for Kharagpur is self-sufficient for everything. That I'll just give you an example. Like a few years back, we had a student, a girl student, whose rank was like 14,000 something rank tha. She went for IIT Kharagpur, MSc in chemistry. Currently, she is working in Microsoft. So MSc in chemistry and Microsoft का कोई relation नहीं है. Chemistry has got nothing to do with what Microsoft is doing, right? But just because you are there in an IIT, you get these kind of opportunities. So don't look down on the branches. यार खड़गपुर में MSc करने जाएंगे या BSc करने जाएंगे, तो it is not like that at all. Whatever you do, the tag of IIT, being an IIT, especially being an IIT Kharagpur, is so powerful that it will overshadow everything else. जाके whichever course you go to, all you have to do is just focus on learning coding. एक बार coding पे decently you become an app, then you will get tons of opportunities just because you are in Kharagpur. That is the advantage that you get from good college. Yes. Also, bachelor level में selecting a better college is more important than selecting a better stream. ठीक है. Master's level पे you should be more focused on which stream you are going into, right? Because that would be the last degree generally that you would do before you enter your career, right? Job life enter करने के पहले masters करते हैं लोग, right? So bachelor में college का exposure is much more important than the course that you are entering. Okay, क्योंकि आजकल interdisciplinary काफी सारे courses होने लग गए, right? Things have become very flexible. Just as Amit sir said, कि from chemistry, the students end up with a job in Microsoft, etc. So interdisciplinary courses, things have become quite flexible. So do not get stuck to the idea कि मेरे को CSE करना है या यही stream करना है. Be open to entering another stream, and if you go into a good college, it will help you better.
the exposure there, the alumni network there, the opportunities that are served there, that are, easily available there is unmatched. And so going into a better college with a lower stream is always suggested than going into a bad college or an average college with a so-called good stream. ठीक है ना? So why good stream? यहाँ इंडिया में ये chronology है, right? कि CS is the top and then IT or ECE, electrical and so on and so forth. Why? Because in India we think a lot of in terms of packages, right? The best job opportunities and so on, which kind of makes sense, right? We are a developing country, and so the jobs and the packages and etc. are an important thing, a very important factor that we have to consider, right? But the point is, so America में there's no such thing, right? There's people go more with what they are interested in. कि क्या मेरे को अच्छा लग रहा है पढ़ना, मैं वो पढ़ूंगा. And I also believe the same. If you are expert in whatever you do, you will always be in demand. ठीक है? चाहे वो coding हो, चाहे वो mechanical engineering हो, चाहे वो कोई भी और profession, right? If you are good in what you do, you'll be in demand, right? तो ऐसा नहीं सोचना है कि computer science ही future है और और कुछ में future नहीं है. This is a wrong way to. Yes, of course, current job market wise, computer science offers the best packages, right? Job wise, it still is the best option, but people go to chemistry and then get a job in Google or Microsoft. So which speaks for itself that a good platform is more important, right? this is the general trend that is follow and इसमें से अगर कहीं पे भी जो colleges में अगर हो रहा है then that is considered to be good. अगर IITs, NITs, triple ITs में हो रहा है then अगर BITSAT के through से हो रहा है, COMET के through से हो रहा है और even the private colleges we have list 4-5 private colleges and then WBJE के कुछ government colleges है उसमें अगर हो रहा है then that can be worth considering options. हाँ इसके नीचे दैट वी से कि मतलब हाँ थोड़ा सा देख समझ करके जाना चाहिए जहाँ पे हमारे स्टूडेंट है वहाँ पे जाना चाहिए. IITs, NITs, IITs के लिए obviously this 12 options which are like category 1 में जो आ रहा है मतलब this is good मतलब up to Dhanbad it is considered to be good. Even some of them IIT Ropar हो गया this is also considered to be good. तो ये सब में अगर मिल रहा है like from the first list अगर मिल रहा है that can be considered. Again, yes, newer IITs में this concern is there, right? Newer IITs में जाना चाहिए या नहीं? I would say you can go for it if you are getting a decent NIT, right? उसमें एक decent stream मिल रहा है उससे better होगा go into a newer IIT, right? So our students have gone to colleges like IIT Jodhpur, IIT Patna, and they give good feedback, right? So up till Bhubaneswar, I guess, if you are getting it is fine, right? Top 15, 16, 17 IITs, if you get, it is fine. You should go ahead with it. Instead of repeating a year, it is always sensible to invest one extra year and do masters. Masters करना is a must. Be very clear on this. क्योंकि नहीं तो एक पॉइंट के बाद में you will feel that your career has come to a saturation. So doing masters एकदम compulsory है. चाहे वो आप MBA करो या MTech करो या बाहर से MS करो, that is that thing can be decided later, but masters is a must for a good career, right? You can just put your phone on silent mode, right? That is disturbing. So masters is absolutely compulsory, and so I suggest कि एक साल repeat करके और वापस से entrance exam देने से better है go for a decent college bachelor's and then for masters you can go for a better college. Masters में क्या होता है, the competition becomes 1/3. कैसे 1/3 वो भी मैं explain करता हूँ. 1/3 of the students will join some job. 1/3 of the students go for an MBA after bachelor's, right? After a BTech, and only 1/3 students would go for a MTech through gate, right? MTech or MS through gate, right? So the point is the competition becomes 1/3, and so getting a seat in masters is way easier than it is in at BTech level. ठीक है, तो मास्टर्स डेफिनेटली करना है. आई जनरली सजेस्ट कि 4 साल पहले बैचलर्स कर लो, 2 साल जॉब करो, राइट? सो दैट यू
earn something for yourself, right? Save something for yourself and you can fund your masters. Bachelors मॉम डैड के पैसे से करना चाहिए और मास्टर्स खुद के पैसे से करना चाहिए, राइट? यू शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन देम इवन आफ्टर बैचलर्स. सो इफ यू आस्क मी द बेस्ट थिंग इज बैचलर्स कर लो, मॉम डैड से वापस से जो 18 साल से जो करते आ रहे हो मॉम डैड से पैसे मांग के बैचलर्स कर लो, तो वो तो सपोर्ट करेंगे, यू नो दे आर देयर फॉर ऑल योर लाइफ, राइट? सो even if it is out of their means, they would not hesitate, they would not give a second thought to go beyond their means and provide for whatever you need. But it should be your responsibility now. Ki my bachelor's ke liye to yes, I will have to take some money from my parents, but this must be very clear कि masters के लिए I will not take a pie from my parents. Right? 2 साल में जॉब करूंगा, पैसे बचाऊंगा और फिर और एक बात जो आता है कि एजुकेशन लोन का, पीपल आस्क मी कि सर एजुकेशन लोन ले लेना चाहिए क्या? तो बैचलर लेवल पे पहला बात तो फीस स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए, तो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि काफी डिफरेंस 10 से लेके 30 for the 4 years, 10 lakhs for the 4 years to 30 lakh up to 30 lakhs for the 4 years, right? So there's a big difference. In fact, some colleges this year I heard Comet K, they are offering a management quota seat at 50 lakh rupees for the 4 years, right? So there's it's a big slab, 10 lakhs for 4 years to 50 lakhs for 4 years. So first, check what is the fee structure there, and if if you're if at home, discuss it out with your parents. अगर लग रहा है कि 50% of it you'll be able to pay, at least 50%. Then the other 50%, if you take a education loan, it is fine. That can be repaid after 4 years when you get a job. ठीक है? But अगर लग रहा है कि 100% ही मुझे scholarship लेना होगा, then you would want to give a second thought. Then I would suggest go into a college with lower fee structure. Like जादवपुर में fee structure और कम. जादवपुर का फी स्ट्रक्चर आई गेस 10,000 रुपए yes per semester or per year, whatever it is. So so it is very cheap that. So ROI is best in Jadavpur, right? So again you'll have to consider these things, right? You cannot put बहुत ज़्यादा load on your parents, right? Talk it out with your parents. Parents also actively involve yourself with your kids in this discussion. And these kids are grown up, right? The class 12 pass today, they understand everything. Trust in them, and actively involve them in this decision, so that they also understand that this is a responsibility. It is a common responsibility of the family, not just parents' responsibility. It is a responsibility which also students should take part, right? To involve family discussion. Dinner table पे discuss it out that किस तरह से क्या होना चाहिए and go for it, right? So 50% generally, not more than that. 100% education loan लेने से प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है कि back of the mind कि यार मेरे को repay करना है. I mean, I have seen these things in the past. Whatever I am saying is from whatever I have gathered in these 15 years of teaching. तो unnecessary एक वो प्रेशर रहता है बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में भी वो प्रेशर रहता है, तो it is really not a good thing. 50% if you are able to fund the entire thing, entire 4 years, it is great, but at least 50%. और नहीं तो फिर कोई दूसरा कॉलेज with a lower fee structure you should consider. Next, when NITs, obviously ये category 1 वाले जो सारे NITs हैं, these are good to be considered. Even some colleges from category 2 can be considered for NIT options. तो दुर्गापुर जमशेदपुर जो है NIT हमीरपुर तक is also very good. हमीरपुर में कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, तो Durbhanpur में will have an advantage कि 50% reservation है for the state quota. Correct. There will be more seats available for West Bengal students. करेक्ट. तो दुर्गापुर में वो होम स्टेट का एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा, तो लोअर रैंक में भी यू कैन गेट अ गुड स्ट्रीम. आल्सो IST शिवपुर would be an option, but again I would suggest कि कलकत्ता या बंगाल से बाहर जाओ तो बेटर है, राइट? जादवपुर, दुर्गापुर, खड़गपुर, these 3 you can consider, but apart from that, if financially बहुत ज़्यादा if things are not very difficult, I would suggest go. क्यों? Because घर पे यहाँ पर कलकत्ता में कोई कॉलेज में ले लेने से क्या होता है कि वो सेम स्कूल लाइफ ही कंटिन्यू हो जाती है. जो 4 साल जो 12 साल से स्कूल लाइफ चल रही है वही बच्चों की, बस वो स्कूल की जगह कॉलेज जा रहे हैं और आ रहे होते हैं.
और सब चीजों के सब होता है, उसका इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चलता, राइट। हॉस्टल में अगर आप जाओगे तो वो खुद से कपड़े धोने और खुद से झाड़ू वाड़ू लगाना सीखना, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। तो सब चीज जो यहाँ पर फ्री में मिल जा रही है बच्चों को, उसकी वैल्यू पता हो, और वो पता होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आई सजेस्ट हॉस्टल में डेफिनेटली, अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अपना अपने नहीं अफोर्ड कर पाए तब फिर अलग बात है। ओनली इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि कैलकाटा का कोई यहाँ का लोकल कॉलेज में, अदरवाइज प्लीज सेंड योर किड्स आउट। I know it is a difficult decision, पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इमोशनली कि बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे हैं, इट इज टफ फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द पेरेंट्स, बट फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट द चाइल्ड विल come out as a mature person 4 years later, right? And that is what we would want for the students, right? कि 4 साल में वो लोग एक mature individual बन के आए, responsible, absolutely, responsible people, citizens of our country वैसा बन के आए। वो चीज सिर्फ घर पे रह के नहीं होती, क्योंकि पता ही नहीं चलती है कि अपने को जो घर पे मिल रहा है उसका क्या वैल्यू है, राइट। तो वो बहुत जरूरी है, खुद से कपड़े धोने, थोड़ा रैगिंग होना, राइट राइट, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी कम हो चुकी है रैगिंग, तो डोंट वरी अबाउट क्या रैगिंग होगा पहले के कंपैरिजन में, राइट। तो काफी कम हो चुकी है, थोड़ा बहुत रैगिंग जो होती है होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल बच्चे सिर्फ वो नर्ड बन के जाते हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो डी-नर्डिफाई करने के लिए बिट ऑफ रैगिंग इज नीडेड, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। And we should trust in our our children. Don't think the ये drug वाला aspect भी कल कुछ parents पूछ रहे थे after कि drugs है and alcohol use है etc. सब colleges में है। We should trust in our children, we should trust in our upbringing, we should have trust in our upbringing, right? हर colleges में, and it is good कि bachelor level पे वो चीज expose हो जाती है, लेटर ऑन इन लाइफ कभी भी वो इधर उधर डगमग नहीं करेंगे, राइट। दे बिकम स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स कि भाई मेरे को क्या करना है नहीं करना है, मैं अपना दिमाग यूज करके करूंगा, कोई मेरे को बोल दिया उससे मैं इन्फ्लुएंस होकर नहीं करूंगा, राइट। तो ये सब चीजें हॉस्टल लाइफ, बैचलर लाइफ में एक्सपोज हो जाए बच्चे इससे, तो बहुत अच्छा है। डोंट थिंक कि मैं बच्चों को शील्ड करके रख लूंगा और ये सब चीजों से एक्सपोज होने ही नहीं दूंगा, एक्सपोज तो कभी ना कभी होना होगा। तो कॉलेज लाइफ में they can become stronger individuals. So please send them to hostels if there is an option. मतलब अगर मुझे पूछा जाए I would always say हॉस्टल में भेजो। कैलकाटा के प्राइवेट कॉलेजेस में तभी जाना है जब बाहर का प्राइवेट कॉलेज का फीस में अफोर्ड नहीं कर पा, अगर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तभी, नहीं तो आई शुड सेंड द स्टूडेंट आउटसाइड। Next are triple ITs. Triple ITs में भी these are the 2-3 types actually, मतलब जो भी consider कर सकते हैं। मतलब type 1 जो है international वाला, these are private colleges, but obviously these are good options. Again type 2 वाले जो है these are government colleges. इसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है, but some of them are really good, तो उसमें भी consider. And you can see the list the next line. So international वाले जो है हैदराबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर and Naya Raipur, these can be considered except for triple IT Pune, मतलब वो that is not very good option, ठीक है। So these are the private ones, triple ITs. ये सारे गवर्नमेंट वाले हैं। इन द गवर्नमेंट ट्रिपल ITs, इनसे कैटेगरी 1 वाले जो जितने सारे हैं मोस्टली दोज आर गुड ऑप्शंस। यहाँ पे 2-3 जो रहेंगे दैट कैन बी स्टिल कंसिडर्ड, लाइक ट्रिपल IT तिरुचि वाला है, वो वाला ठीक है इसमें से। एंड ट्रिपल IT दिल्ली का जो कॉलेज है दैट इज लाइक उनका जो एडमिशन होता है दैट इज थ्रू JAC, जॉइंट एडमिशन एंड काउंसलिंग। जो दिल्ली के कॉलेजेस DTU हो गया, फिर एक गर्ल्स के लिए है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके है, दैट इज देयर। फिर एक सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, दैट इज 3 कॉलेजेस आते हैं DTU में। आई थिंक उसके लिस्ट भी मैंने शेयर किया था, उसका रैंक है, मतलब क्या JEE मेंस के रैंकिंग के थ्रू से लेते हैं JAC में, तो उसके थ्रू से क्या रैंकिंग में वो 3-4 कॉलेजेस में एडमिशन होता है, दैट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, यू वुड बी एबल टू चेक दैट। नेक्स्ट कमिंग टू बिटसैट। तो बिटसैट के थ्रू से जो स्कोर्स BITSAT again a few points I would want to discuss. BITSAT is Pilani, Goa, Hyderabad, all three they are very good colleges, of course. The best part about them is alumni network, right? All these colleges
IITs वगैरह में all government colleges have 50% reservation, right? So 50%, only 50% are general, but BITS में 100% of it is general category, right? So the alumni network in BITS is definitely, better than most IITs, right? And the the curriculum is also quite advanced. IITs and all other government colleges are still trying to catch up with the course structure that is already there in BITS, right? So इस साल Kharagpur is also introducing this SAP semester away program, जो पिलानी में BITS में हमेशा से रहा है कि लास्ट सेमेस्टर में एक साल 6 महीने का बाहर ट्रेनिंग होता है, in some different companies where and all the credits are from that semester away program, right? उस particular semester, right? So that is a very good thing which Kharagpur is again introducing this year, right? Problem ये है BITS में the fee structure is slightly high, right? Will be like 24-25 lakhs for, yes, 25 lakhs for the 4 year. अगर 5 साल का कोर्स है तो वो will be like 30 lakhs. But again, there is means and merit scholarship available. Like last year भी जो students गए थे, they called me up and they have informed कि they are getting 80%. मतलब हर semester का fees will be decided based on the previous semester का scores. And people get up to 80% scholarship. So अगर वो 80% scholarship वाला slab में चल जाते हैं, तो it becomes very reasonable, right? And BITS का, as I said, the alumni network is unmatched, right? Better than most IITs because it is 100% general students. So इसमें generally a very good combo is MSc in Eco or Maths. MSc in Eco and Maths with BTech course in computer science or any of these circuitous streams. ठीक है, तो अगर ये मिल रहा है BITS गोवा में हो या पिलानी में हो या हैदराबाद में हो, जनरली अभी हैदराबाद को रैंक 2 दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ लोकेशन. ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है या नहीं है. तो जनरली 4-5 पॉइंट्स होते हैं. पहला होता है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, जितना पुराना कॉलेज होता है उसका उतना क्रेडिबिलिटी होता है. ठीक है, तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट should be the first thing. The next thing that you should check is the on campus companies. ठीक है, unnecessarily just placements को हाइप कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ से इतना का जॉब लगा, हाईएस्ट सैलरी. तो अगर वो एक ऑफ कैंपस जॉब है तो उसमें कॉलेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. ऑन कैंपस कितनी कंपनीज आ रही है, दैट वन मस्ट चेक. द थर्ड थिंग इज द लोकेशन ऑफ द कॉलेज, राइट? जैसे अगर कॉलेज सबर्ब में है तो नॉट मेनी कंपनीज वुड वांट टू विजिट दैट. मतलब अगर मैं पूछूं कि अगर ऐसा सोचे कि भाई बैंगलोर का कोई कॉलेज है, तो कॉमेट के क्यों फेमस हुआ? बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रीजन. कॉमेट के का जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसका फेमस होने का रीजन यही है, इन डिमांड होने का रीजन यही है कि इट इज इन बैंगलोर and it is our tech hub, right? अपना कंट्री का. And so almost all companies are there. And so कोई भी recruitment the requirement होता है तो they would go to the local colleges and do the recruitment there, right? Instead of traveling so many kilometers into a suburb village में कोई college, तो location of the college is also a very important thing. तो हैदराबाद को रेट जो ऊपर कर रहे हैं लोग इसीलिए कर रहे हैं, it is in the city, right? And so the opportunities are better. Another thing that one must check is the number of professors who are on payroll there. Okay, most colleges do this कि हर stream का एक prof रहता है और बाकी सब वो assistant prof और and even more lecturers and etc रहते हैं, तो with no experience in research. तो जितने number of professors हो उस particular stream में या उस particular college में, उस college का research culture उतना better. So generally this is also a very important thing that you should factor in while deciding कौन सा कॉलेज में मैं जा रहा हूँ. Okay, yeah. So MSc Eco and MSc Maths अगर मिले कोई भी तीनों में से तो चले जाना चाहिए, right? And फिर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे you will again get a chance for a BTech. तो अगर BTech in CS with and बहुत decent GPA में, ऐसा नहीं कि बहुत 9, 9.5 ऐसा चाहिए. Even if you get a 8 CGPA at the end of first year, you are eligible for this MSc plus a BTech in computer science. So which is a very good option. Many students who are with us have done this and are doing excellent.
Coming to community colleges, obviously, these are the colleges, top 6 colleges that we say consider करने के लिए, like RV, MS Ramaiya, BMSC, Dayanand Sagar, JSS and NI Mysore. तो ये सारे colleges अगर community के through से जो ranks आ रहे हैं उसमें से, and these are gettable ranks, मतलब 20,000 ranks 20,000 तक में भी अगर community में आता है तो some of these colleges are gettable. So I'll show you some of the ranks, मतलब जो top 6 colleges के हैं उसके क्या क्या ranks में है. तो like RV कॉलेज में भी like 15,000 तक में इंडस्ट्रियल मिल जाता है. इंडस्ट्रियल इज अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल. लाइक IITs में इंडस्ट्रियल इज कंसीडर्ड एज फार एज लाइक मतलब सर्किटल स्ट्रीम के कंसीडर भी किया जाता है. देन MS में MS रमैया में भी है. देयर आर सम ऑफ द ऑप्शंस लाइक for So information science and engineering, any of these circuital streams, if the child gets, तो जाया जा सकता है. Instead of wasting a year, repeating a year, generally students ask me, sir, एक साल repeat कर ले. I generally do not, encourage repeating a year. Okay, most institutes do for their monetary benefit, but I do not, because it is not a very smooth experience. मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ, repeated batch को भी हर साल पढ़ा रहा हूँ. It is not a nice experience. Right? Same पढ़े हुए concepts फिर से पढ़ना, same पढ़े हुए दिए हुए problems फिर से करना, it is very monotonous. अलग लेवल का फोमो आ जाता है मन में कि सब जन मेरे दोस्त लोग तो बाहर चले गए और मैं क्या यहीं पे अटका हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ. तो और पहला 1-2 महीना एंटू रहता है, फिर उसको एंटू चला जाता है. तो साल भर तक वो एंटू रखना और फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर पाना, मोनोटोनिसिटी जो हो जाएगा उसको ओवरकम कर पाना, will take a lot of determination. So only if you want to get into IIT that bad, it makes sense to drop. Okay, बहुत ज्यादा आयरन ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन चाहिए. अगर उतना है कि मैं एक साल बिना इधर उधर अपना ध्यान वेवर किए, एंड इट इज वेरी टफ. इट इज इजियर सेड देन डन. मैं देखा हूँ बच्चों को जो रैंक पहला अटेम्प्ट में आया, सेकंड अटेम्प्ट में सेम रैंक आते हुए वर्स रैंक भी आते हुए. ऐसा मत सोचो कि रिपीट करोगे तो आराम से पक्का से बेटर रैंक आई जाएगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं. ठीक है, कंपटीशन हर साल बढ़ना ही है. और एंड अ लॉट डिपेंड्स ऑन दैट डे. उस दिन तुम्हारा कैसा दिमाग चला और कैसे क्वेश्चंस आए, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए, क्लिक हुआ उस समय, और so there are a lot of factors which you have no control, right? So that element of luck, so to say, will always be there in these heavy competitive exams, right? So unnecessarily repeat करके, and it is a very frustrating and a lonely journey वो एक साल. So only if you want that college, that particular college that bad, should you repeat. ठीक है, जनरली रिपीट 2 टाइप के स्टूडेंट्स को करना चाहिए. एक जो शॉर्ट मार्जिन से मिस कर गया, और दूसरा जो पढ़ाई नहीं जेई के लिए. ऐसे बच्चे जो जेई के लिए सही से पढ़े हैं मोर और लेस 2 साल और फिर भी रैंक नहीं आया, उनको नहीं रिपीट करना चाहिए. या रैंक थोड़ा लोअर स्पेक्ट्रम में आया. Yes, absolutely. So instead of that, go for a BTech from a lower college and then master's अच्छे college से करना. That should be the logic, right? नीट में unnecessary 4-4 साल 5-5 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्रमोट करते हैं रिपीट करना and stuff, it's just very bad. It's wrong. It's almost like a criminal thing that these coaching institutes do. Anyway, so the point is repeat. First thing नहीं करना चाहिए. Second, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है and I want that particular college that bad, only then you can think of it. And how do you think of it कि मैं रिपीट कर पाऊंगा या नहीं? पढ़ाई करके स्टार्ट करके देखो. तुम 15-20 दिन में या तो ऑलरेडी बोलोगे कि भाई नहीं हो रहा है पढ़ाई, क्योंकि सेम किताब, सेम बुक, सेम नोटबुक, सब सेम चीज लेके बैठना होगा. एंड आवर माइंड नीड्स न्यू थिंग, राइट? सो ईटिंग द सेम फूड, रॉटन फूड माइट नॉट बी अ वेरी वेलकम एक्सपीरियंस. ठीक है, तो 15-20 दिन मुझसे पढ़ाई करके देखो. अगर लग रहा है कि साल भर टाल लोगे तो फिर कंसिडर करना, नहीं तो गो फॉर अ कॉलेज व्हिच इज अवेलेबल दिस टाइम. क्योंकि एक साल रिपीट करने के बाद भी सेम या वर्स ऑप्शंस अगर मिलेंगे तो इट विल बी इवन और खराब और फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? आई एम नॉट ट्राइंग टू साइड यू आउट ऑफ इट, बट द पॉइंट इज आई जनरली डू नॉट प्रमोट टेकिंग अ ड्रॉप. These are the 6 colleges. ये सब में like आराम से. Yeah, so these the PPTs we'll forward it to you. Yes. So you can have a look through the rankings and what ranks में what colleges you can get.
private colleges में, then coming to like first option में like VIT Vellore and VIT Vellore is considered to be good, but again इसका intake बहुत ज़्यादा है, like around Yes. This point also I missed. To decide the which college to go, a very important factor is the intake. अगर बैच साइज बहुत बड़ा है तो उसको प्लेसमेंट कराना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो बहुत बड़े बैच साइज वाले कॉलेजेस में जाना जनरली मैं नहीं प्रेफर करता, मैं नहीं सजेस्ट करता, राइट? VIT टेक्स इन नंबर ऑफ एडमिट्स एवरी ईयर, और फिर मतलब ऐसा करा देते हैं कि 2 बैचेस में डिवाइड करके, सेम ईयर के बच्चों को 2 बैचेस में डिवाइड करके रखे हैं। 3 महीने में उनका सेमेस्टर से वो ट्राइमेस्टर बन जाता है। 3 महीने में उनको वो पूरा सेमेस्टर क्रैम करा के बोलते हैं भाई तुम अब घर जाओ, ताकि जो दूसरा बैच है उसको बाकी 3 महीने में वो सेमेस्टर कंप्लीट कराए। तो बहुत ही मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं, बहुत बड़ा बैच साइज हो जाने से। तो अगर वेलोर और मणिपाल में मेरे को अगर चूज करना हो तो एनी डे आई वुड सजेस्ट मणिपाल, क्योंकि द बैच साइज इज लिमिटेड, प्लेसमेंट कराना आसान। Yeah, again, these 3-4 colleges are there, जो कि मतलब private colleges are these considered to be good. Manipal recently has risen very a lot. ठीक है, similarly Kalinga, then Bennett and Mahindra. For Kalinga, अभी registrations open है and the examination is due. KIT का, KIT का. okay. First and second July को होगा and the registrations are open. So if you have, if someone hasn't had any good results in any of the other colleges, so KIT का अभी भी registration open है. You can take a chance. Register करके the exam will be an online exam, second year, 3rd July को है, something like that, and you can appear for that exam. So it might, given could be an option from there. So Vellore and KIT again, they are good options. The problem is with the back sides, right? Very big, very huge intake. तो वहाँ पर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, and then good college, good companies do visit there, right? So if you perform well there, you get into the best of the companies, but the back side is definitely a problem. But again, अगर यहाँ पर कोई private college में जाना है या KIT में कोई KIT जाना है या Vellore जाना है, if you ask me, I will suggest Vellore or KIT, because outside West Bengal, right? So that you can become more independent. Bennett एक बार ये पहले वाला वापस से Bennett University इसलिए I suggest because it is backed by a strong group. Science group का है, तो एक अच्छा strong group अगर रहता है तो in house ही absorb हो जाता है, right? कोई अगर Reliance का अगर कोई college है, right? So those big groups would absorb students in house only. So that's why going into these colleges like Bennett, which is backed by Times Group, Mahindra and Mahindra का, so it makes sense. Finally, तो मतलब अगर और कुछ ऑप्शन बाहर के नहीं मिल रहे, अगर like या कुछ स्टे इन कलकत्ता या फिर इन वेस्ट बंगाल ओनली, then these are the options like obviously जादवपुर, जलपाईगुड़ी, कल्याणी, these options are considered to be Government colleges इसमें अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। जलपाईगुड़ी, the placements have become very good, right? So you can consider these government. Kalyani is also these reasonably good. So government colleges अगर हो जाए, जादवपुर में as I said ROI is amazing. Fee structure in these government colleges is less. तो अगर financial constraints है तो going into these government colleges at bachelor's level is more sensible. फिर master's level पे you can go for a better college. Private college again ये वाले तभी मैं suggest करूँगा if there are financial constraints and we are not very okay with, या फिर कोई family issues है and we are not very okay with sending our child outside Kolkata, outside Bengal. तब फिर you can go for these private colleges. The same rule holds true यहाँ पर करके masters में अगर अच्छे college से कर लिया then it is fine. Once you do masters from a good college, then you are a student of that college and not B.Tech तुम कहाँ से करें, right? Again, there are management quota seats in all these. ये government के में भी management quota seats है, IM Heritage में भी है, तो you can also explore those options. I think sir has like Yeah, so up till industrial if you get, it would be considered as circuital stream. Advantage क्या होता है circuital stream में जाने से? All the best jobs, so to say, right? The coding jobs, the best jobs would be open for you, right? And so going anywhere up till industrial is fine.
Energy is also a good upcoming field, right? Many students under us had gone to energy and power, and they're doing good now because with the with every day, right, the energy requirement is increasing. And so green energy वगैरह पे काफी government heavily invest कर रही है, right? So renewable energy पे, so these ये energy और power में भी अगर कोई जाए तो the future looks very good. AI and ML का जो बात है, many students are tending to go towards AI ML. तो अगर किसी कॉलेज में AI ML नहीं है, definitely AI ML has a lot of potential future option future में. But अगर कोई कॉलेज AI ML offer नहीं कर रहा है, तो go to CS. From CS you can always migrate to AI ML. तो पहले क्या था कि पहले computer science was not a branch. So all these ये जो 80s और 90s में जो भी computer science में एंटर करे, they were all electrical engineers to start. तो वैसे ही अब जो आने वाले 10 साल 15 साल में AI ML में ट्रांजिशन करेंगे, they'll all be computer science engineers to start. So data science, data scientists, etc. is obviously very future prospects से हिसाब से it is great. So you can go for computer science if that particular college is not offering a data science stream or a AI ML stream. तो you can check your तुम्हारे रैंक के हिसाब से you can check कि कौन सा ऑप्शंस आपके हाथ में है, and you can feel free to get in touch with us and we can suggest तीन options में से which one would be the best, right? So you can check the opening closing rank of various colleges on that JOSA website, right? Any queries for the general queries? Any other general queries if you have, you can ask us, or else we can have these one-to-one queries. Deepak, if you want to add something on website, like, yes, of course. So Deepak is from IIT Kharagpur, one of our ex-students. He's also now with us. He's teaching math and physics to the foundation, and then 11, 12 students. So, yes. Okay, I'll just give a brief about me. So I also couldn't clear my IIT in my first attempt. So what I did, I joined Kalyani Government Engineering College mainly because of my financial constraint. The college is really cheap, and during my college, I prepared for IIT because I wasn't able to crack by a very short margin. So you can even consider that. You can join a college, and if your margin is really low, then you can again apply for IIT. This way you won't be wasting a year preparing for IIT. So this is something that you can, and rest I think that everything is covered. Thank you, Deepak. We also have our students from IIT Kharagpur, so probably you can talk to them as well on which stream and what are the options at hand. Kharagpur has come out with a lot of new rules this year onwards, right? Double majors, etc. As I said, so you can discuss out with them. Okay, so if anyone has any doubt. तुम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है, अपना intro दे। Hi everyone, I am Madhav Agarwal and I am currently in my second year undergrad at IIT KGP in Industrial Systems, and I have a dual degree course and I have passed out from Zenith, study under Varun sir and Amit sir and Rajesh sir also. So if anyone has any doubt, I can clarify. Actually, lower countries जो है उसका सीन क्या है मतलब? So basically, physics are everything. Applied geology of I'll be very honest. So this year onwards, IIT Kharagpur has demolished department changes. So there's no department changes from now. So you can't DEPC anymore from your first year CP. And they have introduced certain programs also, like double majors. Dual degree has also been abolished. There's only, I'm pretty sure double majors from now here on. And for the lower all branches, one thing that I have to say is that, to be very honest, it is not very likely to go with a very low end branch, like say agriculture or mining, sort of metallurgy, that kind of branch.
from now on, I don't see that prospects that in the future, you can't land a very good job until unless your skill set is very high. So you have to build those skill sets on the way if you're opting for a very low branch. But try and maintain a good college and a good branch, not a very low-end branch and not a very low-end college too. Like brand name, I think matters a lot in these days market where getting a job is very hard. Prospects are really less. So you must be very sure that you get a good college and don't go like, you know, IIT Bombay ही चाहिए. Okay, that's not worth it if you get a very low-end branch like civil and agri. Placement नहीं है यार. Very honestly, there's no placement in there. So try and get a decent branch, a branch that you can associate it with. Don't go with कि मेरे को CS भी चाहिए. I made that mistake and CS के लिए भागना मत. कोई और branch भी मिलती है, you can very well study the concepts of CA. You can do minors. There's a program known as minors. You can choose electives in any other branch. Say for sure you like ECE, other branches like CS. You want to know some concepts, artificial intelligence. You can take up electives and study them. You can do a minor. You can get a minor degree on those courses as well. And there are other also interdisciplinary programs that our colleges, you know, coming up with that you can opt in. So there's not that if you have a particular interest towards the subject that you have to take up that subject only. And it's not like that if you want a specific college, wo lena bhi is not worth it. Just try and maintain a balance between the stream that you choose and the college that you choose. So don't fixate on anything that is only the guidance taken. So if you are getting biotechnology in IT Kharagpur and petroleum in IT Dhanbad. So for this question, I think Dhanbad is known for its mining and all that. So considering from that prospect, Dhanbad would be a better choice. But if you don't have any interest in that particular subject, then I would say IT KGP placement perspective wise. Although placement perspective यार मत देखो, I would say placements का data देखना online की इसका average package ज़्यादा है, इसका वो ज़्यादा not worth it. At the end तुमको skill build करना है खुद से. No one is there to guide you in college. It's not spoon feeding and all that like in school. So you'll be on your own. You'll have to navigate on your own. There are seniors and वो college choose करो जहाँ culture बहुत अच्छा है. Like I see IIT KGP में ना culture बहुत अच्छा है. Seniors are always there to guide you, navigate you through process. So I can speak for IIT KGP. I don't know much about IT Dhanbad का prospect, but choose a good college and make sure कि बहुत lower branch मत ले. That is हाँ. मतलब I think Rishika can guide you. She's in biotech and IT KGP. I'm not in biotech. ये biotech में. अरे मेरे डिपार्टमेंट चेंज हो गया एक्चुअली मैं बायोटेक में तो वो ये कि करिकुलम थोड़ा मतलब लोडेड रहता है बायोटेक मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको बहुत लोड लगेगा इसलिए वैसे लोड लगेगा ऐसा नहीं है तो डिपार्टमेंट एक्चुअली क्या है बायोटेक मतलब वही है कि अगर रेजोनेट कर पा रहे हो तो कर पाओगे मेरे को तो बहुत दिक्कत हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में बायो सब्जेक्ट रहता है उसमें मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है तो वही बात है कि अगर 4 साल पेंटिंग कर पाओगे मन है तो कर सकते हो बायोटेक वरना ट्राई करना लिंक्डइन में जाओ और धनबाद के किसी सीनियर 3rd ईयर 4th ईयर को पकड़ो वो तुमको ज्यादा अच्छा नॉलेज दे पाएंगे कि जीपी बायोटेक लिए कि धनबाद का बोले तो तुमको ज्यादा प्रॉस्पेक्ट दे पाएंगे आइडिया दे पाएंगे कि क्या करना है क्योंकि एट दिस पॉइंट मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा बता पाऊंगा कि धनबाद के लिए लेना चाहिए कि आईटी के जीपी का बायोटेक क्योंकि वेबसी भी बंद हो गया तो चांस कम रहेगा अगर बाई चांस बायोटेक में अटक गए तो दिक्कत हो जाए तो देखना उसके ऊपर कंसिडर करना लिंक्डइन में जाके तो और दूसरे सीनियर 3rd ईयर 4th ईयर को खोजना इनसे पूछना वो अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं धनबाद में लिंक्डइन पे जाना लिंक्डइन पे धनबाद के सीनियर को पूछना उनसे वो पूछना मतलब इंट्रो देखना सीनियर से बात तो बेटर आइडिया देखिए धनबाद का कैसा कल्चर है क्या फ्यूचर होगा बेसिकली अच्छा आइडिया है कि क्या इसका स्कोप बायोटेक में बता दिया कि तो दिक्कत होनी है तो डाउट कि ना otherwise we'll start off with the one-on-one discussion with the parents और हमको all the aspects of electronics bits में electronics वो configuration अच्छा है bits को 26 होगा तुम देखिए फर्स्ट वाले में 262 आया सेकंड में लेना ट्राई करना अगर सीए का चांस है तो सीए करना बना इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी मैंने बताया कि आप पर क्या सी मिलर तो आप कुछ लेकर देख लो the route बोले ही नहीं सर डाउट फिर माधव से बोल दिया आगे भी तो कंफ्यूज कर दिया सर तो सर हम ये सेम प्रॉब्लम्स फेस किए सर like I have talked to a lot of people during my counseling period and the more people you talk to now the more you get confused and
one thing I'll say is that trust your instincts guys, because that is the one thing that you have to live up to. क्योंकि आगे जाके ना there won't be anyone to say कि this was not your decision, you have taken this decision, so make sure that you make the right one और instinct follow कर रहा है. 10 लोग से I heard कि ये ले लो वो ले लो, ये ब्रांच अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, but at the end ना choose what your instincts is and obviously connect with your seniors, alums and teachers are also there to guide you. मैंने भी वरुण सर से बात किया, राजेश सर से बात किया, अमित सर से बात किया, सबसे बात किया, got all my मतलब बेस क्लियर है कि मेरे को कहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है. First navigate through that कि तुम्हारे options क्या क्या है. Don't miss out any options and don't just think from placement perspective. सब लोग यही करते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में किया था कि यार कहाँ का एवरेज पैकेज ज्यादा है, irrespective of मेरे को क्या मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, लोकेशन कैसा है, कल्चर है कॉलेज का, कुछ नहीं मिल रहा. So that's very important that तुम लोग पहले तो अपना instinct follow करो and make a wise decision because this is a very important period of time. जितना important preparation था उतना important choosing a colleges and लोग उसको seriously नहीं लेते हैं. So fill your preference order जो होता है counseling का very wisely. That is something you'll have to stick up with. ये supernumerary seats के बारे में girls थोड़ा खराब रैंक वाला क्या क्या रैंक और क्या कॉलेज. तो बेसिकली लाइक 20,000 रैंक तक केजीपी में लोअर ब्रांचेस मिल जाएगा. तो लाइक अगर वो कॉलेज की मेंस में सर्किटल मिल रहा है अच्छा एनआईटीज में या फिर आईआईटी में, सो बस आईआईटी का एक ब्रांड नहीं लगेगा. सो इट्स योर चॉइस. मतलब अगर सब बोलेगा कि आईआईटी जाओ तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. अगर टेक में जाना भी है, अगर तुम वो भी मैनेज कर रहे हो और फिर अपना डिपार्टमेंटल क्लासेस भी, क्योंकि टेक्सी का ऑप्शन ऑलमोस्ट हर आईआईटी से हट चुका है, तो वो स्कोप बचा नहीं. तो बेसिकली वही ट्राई करना कि इंस्टिंक्ट्स फॉलो करो एंड इफ यू आर कि हम दोनों चीज कर पाएंगे और सीनियर से बात करो, उसके बाद ही वो डबल मेजर्स का बताया. डबल मेजर्स का 6 ईयर का कोर्स लगा. डबल मेजर्स के बारे में क्या आप बता देते हैं? एक्चुअली डबल मेजर्स का क्या अभी सीन निकला है कि अगर कोई दूसरा लोअर ब्रांच हुआ तो दिक्कत और प्लेसमेंट के दिक्कत आ जाता है. अब डबल मेजर्स से क्या सीन है कि अगर मान लो कोई सीजीपीए क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट में मेजर करने मिल जाता है उनको. अगर उसमें मेजर करने मिल जाएगा तो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प होता है. तो वही है कि अगर फर्स्ट ईयर से मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलो, बैलेंस करके वो टेक साइड नॉलेज एंड वो द एकेडमिक साइड, देन मेजर्स अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा बात है. तो प्लेसमेंट को दिक्कत भी नहीं आएगा और जो तुम्हारा लाइक लोअर ब्रांच की साइड जो मिल रहा है वो तुम्हारा ओवरकम हो जाएगा. वो अगर तुम्हारा मेजर्स में कोई अच्छा सब्जेक्ट लग जाएगा तो या तो माइनर्स भी कर सकते हो, जिसमें सीएस उसमें यार सीएस इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ कर सकते हो, तो वो भी बेनिफिशियल है. अगर मेजर्स नहीं करना है क्योंकि 6 ईयर प्रोग्राम होगा, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है. हाँ 6 साल होगा ये पक्का है. हाँ मतलब ये So this was basically introduced this year only. So what KGP seniors were also complaining about for a lot of time and director was also in process to solve this problem कि बच्चे ना अपने डिपार्टमेंट में खुश नहीं थे, सिर्फ आईआईटी ब्रांड इमेज की वजह से वो डिपार्टमेंट ले लिया एंड एंडेड अप डिडंट लाइकिंग देयर ब्रांच. तो अब हम लोग के कॉलेज ने क्या निकाला है कि से योर मेजर योर प्राइमरी डिग्री इज इन से मेटलर्जी and you're not satisfied with it, so you can opt for any other interdisciplinary course, say EC, say CS, any other course, and you can do a major in that as well. Just क्या होगा कि आपका time period in college will increase, but you can go for any other interdisciplinary courses and you can study that as well. So you don't have to worry about कि मेरा major इसमें है but मेरे को जाना उसमें. You can study using electives, take up majors, take up minors. There's pretty much flexibility in taking whatever you want to study. There's no restriction regarding that. तो मेजर अगर लेता है कोई फर्स्ट ईयर का एंड पे, तो विल इट बी बेस्ड ऑन जीपीए या एनीवन टेक के जीपीए क्राइटेरिया? GPA is really important. चॉइस अपनी भी रहती है, वो मिल रहा है. जो हाँ जीपीए बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या मिलेगा. बस के हिसाब से परफॉर्मेंस पे The choice will be yours, but the GPA cutoff you have to match. You can choose accordingly, but after तो the डेप्सी में भी सेम ही रूल था. डेप्सी में भी कोई हाँ, that was true for डेप्सी as well. डेप्सी में भी had a GPA criteria. तो 6 इयर्स कोर्स रहेगा ये श्योर है. पर वही It will not be a 5 years course. मेरे को श्योर नहीं है. वही मतलब आई डोंट Tenure. मेरे को श्योर नहीं है ये चीज. बिकॉज़ 5 जो year तो है. बिकॉज़ द सर्कुलर ये 5 है ये श्योर है. 5 है इतना sure. 5 तो बनता है. फाइव तो बनता है. दो सब्जेक्ट का अलग है, क्रेडिट नहीं क्लियर होगी तो 5 फाइव मर जाएंगे बच्चे. क्रेडिट क्लियर नहीं, तो हम श्योर है. Five तो इसका मेरे को sure. मालूम है. मेरे ख्याल से 5 5 श्योर. 5 श्योर. क्योंकि it would make sense अगर 5 हो तो क्योंकि because bids six already will be done like that have a frustrating 5 हो year. जाएगा. Six is बिट्स ऑफर्स एन एमएससी प्रोग्राम जिसमें
तुम लोग कोई भी सेकेंडरी डिग्री एबिट्स में भी गया हुआ है, ये सब NIT इलाहाबाद वगैरह सब- में गया हुआ है, मैंने भाई ये हर जगह देखा भाई ये तो काफी काफी स्पेक्ट्रम वास्ट है, एक्सपीरियंस है यस हाँ बिट्स में भी बिट्स में एमएससी प्रोग्राम है जिसमें there's this secondary degree that you get and after your first year आपका CG पे you can choose any other BTech course. So one of my friends did this he's in BITS Hyderabad. So what he did, he took MSc, if I'm correct, MSc Economics. हाँ And MSc Economics लेने के बाद उसका first year कुछ 8.4 या 8.5 CG आया. And cut off उतना ज्यादा नहीं होता बिट्स में. MSc कोर्स वालों के लिए cut off ज्यादा नहीं होता. It's 8.4, 8.3, which is pretty manageable if you study decently. 8.3 is not a big deal. So 8.3 CG निकाल के and now he's in CS, doing BTech in CS. so it is a 5-year course BS हाँ और बिट्स का brand image भी मिल गया. And he's in a very good stream. CS is one of the that teams. way is हाँ हाँ, so he's very stable. So like in that you got a minor in CS or? No, he get a major in Major. CS. उसका BTech is the primary degree, which is in CS. MSc is a secondary degree. That is Masters in Science. so we can give the small token of appreciation for students who have gotten a rank in grade marks. And after that, if you have queries, one-on-one, we can discuss it out. What are the patients you would have to, do so that I can address each of you once you have. Okay? Go on. So, please. तुझे लगा हाँ हाँ तो these books were provided by Thankuriya ji. So these are good self-help books, right? And so जब लगे कि down feel कर रहे हो and so on, so probably you can read these books. They'll give you a lot of moral strength, right? And right, absolutely. So it will help you a lot. So sir has also brought a few books. So the other students probably you can give it out to other students immediately. And- Want to say anything about the books and about the yeah. During pandemic, I was like kind of available free and I think I'm Rajesh Kishan Pugira. I am basically an event manager for last 20 years. And during pandemic, I was like wondering what to do. So I wrote a book on stress management. And move there. Next. This is the book which I have written. This is available in Google Books. You can download free of cost. And it has some very interesting tips which can help your child and the student and everybody to reduce stress while they're studying, while they're pursuing their careers, or while they are in general in life. So there are some disciplines, some tips which I would like to maybe discuss now. And just do 2 minutes or 5 minutes. So the number one tip is to know yourself. Knowing yourself better is the key thing how you cope up with the environment. Knowing yourself means how will you react
to a certain situation, when a certain thing happens, it is like a chemical reaction. Like if, for example, if a person who is very, what do you call, fearful. So if pandemic comes in, he would be the first, he or she would be the first person who would be get very agitated, very annoyed, very upset that this pandemic आ गया मेरे को ही होने वाला है, उसको इतना डर लगा रहेगा. और जो नॉर्मल जिसको कम fear होता है तो वो ठीक है, it is happening, it will pass on. So that is, so you have to take care of your emotions, and to take care of your emotions is the one thing is that you're not giving your remote control to somebody else. Your emotional remote control to somebody else, which means is कि आपकी खुशी आपके हाथ में होनी चाहिए, आप किसी और को खुश करने के लिए आपकी खुशी नहीं होनी चाहिए. That can be anybody, your family members, your friends, your relatives, anybody. So आपको अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना. अगर वो चीज आप अपने हाथ में रख लेते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, वो ये पहला चीज है, आपको अपनी डायरी लिखनी. शाम के टाइम में अगर आप फ्री हो तो